Good morning, class. This is your biology class video, and today we are going to start with your next topic, that is pisciculture, given on page 136. So, fish is a highly nutritious and easily digestible food consumed by many people in India itself. Fish production includes rearing of true fine fish as well as shellfish like prawns, lobsters, oysters. There are certain establishments associated with the capture, preservation, and utilization of various types of fish, prawns, lobsters, etc. So, basically, pisciculture is related to the fish rearing and growth of fish, and because fish is very nutritious to health and it is also easily digestible, and most of the people in India they are consuming fish because not only fish but also some shell animals like prawns, lobsters, and oysters, these are also highly nutritious. So basically pisciculture involves proper capture of fishing, preservation of fishing, rearing of fishing, and then utilization of fish in several different industries. On the basis of modes of procuring fish, fisheries are of two types: capture fishery and culture fishery. Procuring means how we capture them, how we are establishing them. So, capture fishery, in this fishery, fishes are caught directly from the natural sources. So, directly when we are capturing fish from the natural source, natural river, pond, lake, ओशन, सी, जो भी है उनसे अगर हम नेचुरली उसको कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज़ कैप्चर फिशरी. एंड कल्चर फिशरी, इन दिस fishes are cultivated in artificial water bodies called breeding ponds. Now culture fishery is that when fishes are cultivated in the artificial water bodies, जो हमने खुद बनाई है ऐसी water bodies. कई लोग खुद एक स्पेस पे पानी पानी जमा करके और फिर उसमें फ़िश की ब्रीडिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रीडिंग पॉन्ड, एंड दैट टाइप ऑफ फिशरी इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी. On the basis of sources of water for fish production, fisheries can be classified as marine and inland fishery. Marine fishery, in this fish catching areas are found in oceans and seas, क्योंकि मरीन यानी सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर कहाँ होगा? ओशन एंड सीज में. सो इन दिस कैचिंग फिश एरियाज, कैचिंग फिश एरियाज कौन सी जगह है? ओशंस एंड सीज. Modern methods include echo sounders and satellites to locate larger areas of fish capturing, having large number of fishes. Now, marine fishery is basically, in this method, modern methods are being involved like echo sounders and satellites. These are being used to locate कि कहाँ पर ज़्यादा एरिया है और कहाँ पर ज़्यादा फिशेज़ हैं. जहाँ पे भी हायर नंबर ऑफ़ फिशेज़ होंगी वहाँ पर वो डिटेक्ट करेगा एंड देन वी कैन कैप्चर फ्रॉम देयर. नाउ पॉपुलरली कंज्यूम्ड फिशेज़ आर pomfret, tuna, hilsa, and salmon. So these are the fishes which are popularly reared or popularly catched from the marine areas. Next is inland fisheries. It is actually a collective term used for both freshwater and brackish water fisheries. Now it is involving both freshwater and brackish water. दोनों टाइप के collective term inland fisheries में आता है. Fresh water is found in ponds, lakes, rivers, canals, and reservoirs, and brackish water it is mainly found in estuaries, lagoons, swamps, etc. ब्रैकिश वाटर क्या हुआ? थोड़ा जहाँ पे दलदल वाला पानी है, या कम्प्लीटली क्लियर वाटर नहीं है, या कम्प्लीटली सॉल्टी वाटर नहीं है, लाइक एस्टुअरीज में, लगून्स में, या स्वैम्स में, ये सारी जगह वहाँ होती हैं जहाँ ब्रैकिश वाटर होता है एंड इट इज़ स्लाइटली सॉल्टी, where sea water and fresh water mix together. तो ब्रैकिश वाटर इज़ बेसिकली दैट एरिया जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों आपस में आकर मिलते हैं. तो बेसिकली इनलैंड फिशरी में दोनों टाइप के फिशेस, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर फिशरीज दोनों इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट इज कंपोजिट फिश कल्चर, ऑल्सो नोन एज पॉलीकल्चर ऑफ फिश. इन दिस method 5 or 6 species are cultivated together in a single fish pond. Exotic as well as Indian species are reared together. Some exotic species are silver carp, grass carp, common carp. Indigenous species include katla, rohu, and mrigal. So composite fish culture yani it is also known as polyculture of fish.
Now this is a type of method in which 5 to 6 स्पीशीज़, अलग अलग टाइप के 5-6 स्पीशीज़ को साथ में कल्टीवेट किया जाता है एक सिंगल पॉन्ड में। अब इसमें आपको इंडियन जो इंडिजीनियस वेराइटीज़ हैं वो और एग्जॉटिक वेराइटीज़ हैं वो दोनों साथ में ग्रो किया जाएगा। इंडियन वेराइटीज़ का एग्जांपल है कतला, रोहू, मृगल, एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स आर लाइक दिस सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। सो दीज आर द, जब इन दोनों को साथ में ग्रो किया जाएगा इन अ सिंगल ब्रीडिंग पॉन्ड, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट फिश कल्चर। Now, what is the advantage of this composite fish culture? So first is 6 different types of fishes can be found in the same pond. सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि एक ही पॉन्ड में हम 6 तरह की अलग अलग फिशेस को ग्रो करवा सकते हैं। हाई फिश यील्ड, एक जगह है तो बहुत सारी फ़िश का प्रोडक्शन आराम से हो सकता है। एंड ऑल्सो नो कॉम्पिटिशन ऑफ फूड ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। हर फिश, अगर 6 तरह की फिशेस हैं तो 6 का फीडिंग हैबिट डिफरेंट होगा, and that is why there will be no competition for food. Every different fish will be different from the other one. The carps consume only the natural foods. जो भी कार्प्स की वैरायटी होंगी वो जो है नेचुरल फूड को ही कंज्यूम करती हैं केवल। ना व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये तो हमने देखे कि फ़ायदा क्या है, अब नुकसान क्या है इस कंपोजिट फिशरी का। Many fish breed only during specific periods, so there is unavailability of good quality fish seed. This problem is solved by induced breeding. It involves hypophysis, that is injecting fish pituitary hormones to the fish. Example, catfish, mullet, rohu. Now limitation ये है that if we are breeding several fishes together, तो अलग अलग fishes का जो breeding time है वो अलग होता है। That means breeding time means the time when they mate with the other fish. So basically these fish have different their specific breeding time, and so there is unavailability of good fish seeds. तो उनके खाने के लिए प्रॉपर जो है वो फिश सीड जो है वो क्वालिटी अलग अलग होगा, एंड देयर विल बी समटाइम्स अनअवेलेबिलिटी ऑल्सो। सो to solve this problem, sometimes induced breeding is done, and if for induced breeding we need to give injection of pituitary hormone. तो जब this type which is known as hypophysis, so when this pituitary hormone is injected into the head of the fish like catfish, mullet and rohu, then their feeding activity increases at that time. जब उनको हमने सीड डाला है उसी टाइम पर उनको हमें खिलाना है, लेकिन हो सकता है कई फिशेस उस टाइम पर फूड एक्सेप्ट उनकी हैबिट में ना हो, लेकिन जब हम जैसे ही हाइपोफाइसेशन करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, दैट फिश विल बी एक्टिव फॉर ईटिंग, and that is how they will be able to survive. Culturing fish along with an agriculture crop is called integrated fish culture, like silver carp, katla, mrigal. Now again, when these fishes are cultured along with the agriculture crop, this is known as integrated fish culture, like silver carp, katla and mrigal. These are the types of species which are being grown in the integrated fish culture. Next is the sericulture. It is the commercial rearing of silkworms for their silk. नाम से sericulture. सेरी मीन्स सिल्क। नाउ जब सिल्क, जो हम कपड़े पहनते हैं सिल्क के, जिसको रेशम बोलते हैं हिंदी में, तो सिल्क वॉर्म एक वॉर्म होता है जिससे कि हमें सिल्क मिलता है। तो बेसिकली कमर्शियल रियरिंग ऑफ दिस सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। Now, Bombyx mori is the most widely used and extensively studied silkworm. Now, Bombyx mori is the type of silkworm. ये silkworm की variety है, species है। Now again it is written in italics because this is the scientific name. So Bombyx mori is the most widely and extensively used silkworm for the sericulture. Silkworms are reared on a large scale on mulberry trees leaf. ना मलबेरी ट्री के लीफ पर ही बेसिकली सबसे ज़्यादा सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जा सकती है। व्हेन द वॉर्म्स स्पिन देयर cocoons, these are collected and fibers are obtained from them. So when these Bombyx mori or any of the this silkworm, when they weave or worm the spin, तो when these worms स्पिन देयर ककून्स, उनके ककून्स से जब स्पिनिंग होती है तो उनमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर्स कलेक्ट करके उसको प्योरीफाई करके उससे हम सिल्क बनाते हैं। यू कैन सी हियर इज़ द डायग्राम ऑफ अ सिल्क वॉर्म। इस तरह का एक सिल्क वॉर्म होता है इन द शेप ऑफ अ कैटरपिलर। ये जब ककून बनाएगा तो उसी के फिर उसको हम
ऑब्टेन करते हैं एंड देन वी प्योरीफाई इट एंड देन वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम. Next is apiculture. Apiculture is the commercial rearing of honeybees for obtaining various products such as honey, bee wax, and bee poison. Now, apiculture is the another method of rearing of honeybees. अब honeybees से हमें क्या क्या मिल सकता है? Of course, honey मिलता है, wax मिलता है, and also bee poison. Bee poison is used in some medicinal preparation. It is used in the treatment of rheumatoid arthritis. Now bee poison is basically used in some medical preparations. इसका as such कोई और use नहीं है, but it is used in some of the treatments for rheumatoid arthritis. Arthritis जो genetically inherit arthritis है उसको बोलते हैं rheumatoid arthritis, and for the treatment of that bee poison is being used. Honey, we all know honey. What is honey? Honey is a sweet viscous fluid that has many uses in our daily life. Honey हम सबको पता है sweet होता है. It is viscous fluid. Viscous यानी थोड़ा it is in between the liquid and solid state. Completely liquid या completely solid नहीं होता है. That is known as viscous fluid, and it has many uses in our daily life, like it is used to treat digestion disorders such as dysentery, vomiting, etc. किसी को digestion का disorder है, then the person can have honey for its treatment, or in case of vomiting also. It acts as blood purifier and is rich in iron and calcium. So when a person feeds honey, then it is acting as a blood purifier also, and it is highly rich in iron and calcium. Since it is rich in iron, it helps in the formation of hemoglobin, because hemoglobin का main constituent क्या है? Iron. तो इसीलिए जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी अच्छा हो जाता है. इट इज़ अ स्वीटनर एंड एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. वी ऑल नो कि कोई भी स्वीट चीज़ हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है इमिडिएटली. सो it is also a sweetener, so it will also give immediate energy to a person. It contains various sugars such as glucose, sucrose, fructose, and dextrine. So these are the different types of sugars. So these all are present in the honey. For apiculture, a number of varieties of bees are used, such as Apis cerana indica, that is the Indian bee. अलग अलग varieties हैं ये bees के जिनको कि एपिकल्चर में यूज़ किया जाता है. एपिस इज़ द बेसिक नेम फॉर बी, और ये जो है अलग अलग इसकी स्पीशीज़ हैं. जैसे अगर वो इंडियन है तो इट इज़ सेरेना इंडिका. अगर एपिस डॉर्सेटा है, दैट इज़ द रॉक बी. डॉर्सेटा इज़ फॉर रॉक. बी बेसिकली एपिस होती है. एपिस को बी कहा जाता है, और जब उसमें ये अलग अलग नाम जोड़ते हैं हम तो उससे उसकी हम वेराइटी बताते हैं कि इंडियन है. लाइक एपिस फ्लोरी, इट इज़ द लिटिल बी. सो these are the different varieties of bees. Apis mellifera, an Italian bee, has been brought to India to increase the yield of honey. It is better because of high honey collection capacity, well breeding capacity, gentle nature, that is it bites somewhat less, longer stay period in a given beehive. So basically Apis mellifera, it is a Italian bee. Italian bee है जिसको कि इंडिया लाया गया ताकि हनी का यील्ड जो है, हनी का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके. क्यों ये बेटर है, क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी? बिकॉज इट हैज़ हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, क्योंकि इस बी से ज़्यादा हम हनी कलेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ वेल ब्रीडिंग कैपेसिटी, यानी इसकी ब्रीडिंग आसानी से और अच्छे से हो सकती है. ऑल्सो इट हैज़ अ जेंटल नेचर, यानी इनके ये काटते कम हैं ये बीज, इसीलिए they have a gentle nature, and also they can stay longer period in a given beehive. So they can be in a beehive for a longer period. That is why they are good for the preparation of for the increase in the honey yield. Apiary is a place where number of beehives are kept in the wooden boxes. Apiculture is a cheap way to enhance the income of farmer. So apiary is that place जहाँ पर कई सारे बी हाइव्स को कलेक्ट करके एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है और फिर वहाँ पर धीरे धीरे हनी का कलेक्शन होता है. तो बेसिकली एपीकल्चर इज़ अ वेरी गुड मेथड, अ वेरी चीप मेथड, यानी इसमें ज़्यादा फार्मर को ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, और ही कैन इम्प्रूव हिज इनकम. सो बेसिकली एपीकल्चर इज़ दैट. So that is all for this video and this chapter also. Ask me if you have any doubt. So all we discussed about what are the different ways by which the food production is done in India and in worldwide, of course.
So just go through the video and ask me if you have any doubts. That's all for today. Thank you.